in the first session, which is meant for obviously poetry recitations, readings, and Dr. Sagari Chavdaji will chair this session. And the poets who are going to read out their poems in this session are Tulika Chethiya in Assamese, Alambar Mushahari in Bodo, Guadalupe Dias in Konkani, Karna Biraha in Nepali language, Santosh Mayamohanji in Rajasthani language, Shalini Sagarji in Sindhi, and K. Shrikantji in Telugu languages. I formally introduce all the participants as well as chair and then hand over the charge to the chair. Dr. Sagari Chavdaji is an award-winning author and poet and filmmaker as well. Her notable works include The Professional Woman's Dreams, The Gift, which is a play, and she writes for children as well. Her book for children is The Talking Tree. She is the director of the Hamara Itihas Archives, India's first multimedia archive of surviving freedom fighters across India, Malaysia, Singapore, Thailand and Myanmar. She is the recipient of National Ladli Media Award, World Food Day Award of the United Nations, International Association of Women in Radio and Television, North Indian Association's Award of Excellence in Production and Direction. Tulika Chethiya in, the poet in Assamese, a noted Assamese writer and poet, she wrote an autobiographical account in Sambhar, a popular Assamese daily, which later published in a book form, and since then she has 8 published books to her credit besides a few edited works. She has written over 1,000 articles on various folk cultures and historical theories of Northeast India. Many of her writings have regularly been published in Assamese newspapers, literary journals, and also aired on Sahitya, a literary program of All India Radio, Dibrugarh. She is the recipient of International Tathagat Srijan Award. Can we, I thought I was supposed to introduce the poets because we introduce them and they read. Fine, that way also, fine. So just complete it, please. Her, and then we should go. The Bihar Sahitya Sabha Shatabdi Award and Writer Felicitation Award of Assam Government. So, shall I introduce each of the poets or no? It's my job. Fine. Friends, it's always a privilege and honor to be with the Academy. आप सुन सकते हैं? Yes. Why is it going? Yes, it's on. Is it on? Yes. When I press it and keep pressing it, it's on. But when I leave it, it's off. See? आप सब मुझे सुन सकते हैं? Yeah. औरतों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम सागरी छाबड़ा है और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब आए हैं। The poets are the voice of the people and the bhasha writers are the people who have the nerve of the people, the pulse of the people, because the bhasha writers have the sweat, the blood, the pain and the unspoken voice of the people in their writings. We don't hear them enough, and it's a privilege and it's an honor to have Tulika with us. Tulika, we have Guadalupe Dias with us, we have our Telugu writer Shrikant, and so Tulika has already been introduced, so without much ado, I am going to ask you to read your poems. Thank you. Good afternoon.
पहले मैं अपनी भाषा में पढ़ना चाहूँगी। ओ मोर प्रेमिक, आवाज़ आ रही है ना? ओ मोर प्रेमिक, भावी भावी ভাল লাগে তুমি মোৰ, কাষ চাপি গৈছোঁ, পঢ়ি চাব খুজিছোঁ তোমাৰ বহুত খোদিত তাম্ৰলিপি। তুমি কওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰা প্ৰেমৰ কথা, মনৰ কথা, ফুলৰ কথা, স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰা মোক। তুমি শিলাময় বুদ্ধ, দেখুৱাব নিবিচৰা হৃদয়ত খোদিত প্ৰেমৰ ভাস্কৰ্য, শামুকৰ ফুলাৰ প্ৰাচীন বতাহ লিৰিকি বিদাৰি ৰুদ্ধদ্বাৰত নীৰৱে প্ৰেমৰ এপিটাফ লিখা দেৰি লখিয়াইছে চোৱা। দেউকা কোবাই পৰি আহা নহ'লে যে জকিব পঢ়িব তোমালৈ সজা মোৰ প্ৰেমৰ কথা। हिंदी में पढ़ना होगी, लेकिन टूटा-फूटा हिंदी है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का ना, क्योंकि हम लोग स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ते हैं। जो भी सीखा है टेलीविज़न देख के सीखा है, और उसके बाद हम लोग मतलब कुछ मैगज़ीन लेके कुछ मतलब बुक्स का लेकर के जो भी हिंदी है हम लोग सीखा है। इसलिए हम लोग का हिंदी एकदम से टूटा-फूटा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। हौरे सुने के देश, इसी अखबार की तरह फैल गई थी खबर, कोई सोना का देश है, सोना है शांति है, हीरा है मिट्टी के नीचे। ओके, ये एक्चुअली हम लोग का उधर टी ट्रैक्स है ना, इधर से झारखंड, यूपी, इधर से गए थे ये लोग, क्यों गए थे, उनका कहानियाँ क्या थी, ये मैं पढ़ रही हूँ। हौरे सुने के देश, किसी अखबार की तरह फैल गई थी खबर, कोई सोने का देश है, सोना है शांति है, हीरे है मिट्टी के नीचे, सल रे सल, हावड़ा लेके सल। दिल में सजाए एक सुनहरे सपना, धूप से प्यार करने वाले लोगों की दल आगे बढ़ा, झुक पर चढ़कर, भाप नाव या जहाज पर, या फिर पैदल ही चल पड़े लोग। अनिश्चित यात्रा के बाद सपना टूटा, यंत्रणा का प्रदीप जला, ना घर ना भात, हाथों में जंजीर, पैरों में बेड़ी, साबुत की मार से लक्ष्मी का यौवन उभरा। घोड़े सामने वालों ने उसे नोसा, जख्मों पर नमक लगाया, तेल में डाला, पत्थर बन देखता रहा हुआ, विरोध का मतलब था मौत। सपना को खोकर, अपने को खोकर, आत्मा को गिरी रखकर आते रहे लोग, सोने के देश तक आते आते गूंगे हो गए थे लोग। सोने के देश आते आते गूंगे हुए थे लोग। दिन बीते, साबों की आवाज से खड़े होने लगी जंगलों की काट। धान का खेती की पेड़ हटाकर एक कली दो पात के बीच में वो लोग ने सपने जगाए। सीरीज की साया में प्रेम झड़ता है, स्वदेश बुलाता है तो क्या, धोखा देकर आसाम लाए तो क्या, आसाम देश के मुंह सुलटा नहीं है। निशब्द आसमान में बादल बसता है, करम की रात, निरक्षर अवहेलित लोग झूमर नाचकर नहीं थकते। पाटला बाजार में साड़ी कंगन मनी खरीदते नहीं थकते। हाड़िया पीकर शक्तिमान है, हाड़िया मीन्स दारू, कभी नहीं थकने वाला सुखित लांछित जाति का नाम है बागानिया। नमक डालकर लाल चाय पीने वाले जाति का नाम है बागानिया। आदमी नहीं जैसे कोई प्राणी है, उनका नाम है बागानिया। धूमकेतु की टाली पर हाड़िया में बीच में उठू पर बीच, दिल में दर्द, आंसू में समकती है मौत की घाटी। अंधेरा अंधेरा ही है उन लोगों का जीवन, उजाला नहीं है। चारों ओर यम डाकिनी की अट्टहास, हौरे सुने के देश में सांप और सीढ़ी की खेल। सांप सीढ़ी खेलते खेलते दाहिना हाथ बायां हो जाते हैं, बायां हाथ दाहिना हो जाते हैं। क्या आखिर है ये जादू, जादू के बाद समाप्त हो जाते हैं ज्योत्स्ना विपूर्ण। पाता तुला जेमन तेमन,
Mudan mara tango, Haki liya anila asango. Oh Haki, oh Thuka. Thuka ही है ये जीवन, धोखा ही है सोने का ये सपने. धोखा से ही शुरू है जीवन का इतिहास. धोखा से ही लिखा जाता है रामवेल लोगों की समाधि का लेख. एक ही प्रेम की प्रवाह. शीर्षक है प्रेम की प्रवाह. मिताली दी, ये जो जीवन है निसंगता का एक सीधी रेखा है. बांस की गति से उड़ रहा है समय. मौसमी वायु के स्पर्श से गिरती है पानी के तीर. नदी की बहाव से बसंत आता है. ऐसे आनंद मौसम में ही पहाड़ की टहलती की निर्जन रास्ते पर निकल जाने का मन करता है. सालों पहले अरण्य की पुकार पर हम दोनों ने की थी अगस्त की यात्रा. आज की तरह उस दिन भी नदी के बहाव में बसंत आया था. तेरे मेरे रास्ते ने नकुल पहनकर हमारा स्वागत में खड़े थे. पेड़ के पत्ते पर बजे थे प्रेम की सुर. उसकी आंखों रुक रही थी आशा की पौधे. मेरी आंखों बेताड़ रही थी प्रेम की बीज. ऑर्किड मुस्कुरा रहे थे. धनेश इंतजार कर रहा था अपना प्रियो का. घर लगने की पक्षियों की कलरव से मुखरित हुआ था आसमान. घंटी की संगीत की लय के साथ घर लौट रहे थे. हुक्के की गुड़गुड़े के साथ लौट रही थी किसाने के. हम दोनों खिलखिलाए थे जैसे सिंघल समुद्र की लहर. सूरज के डूबने के समय ही पूरी हो गई थी आलू की एक सुखयात्रा. वो लोग बुदबुदा रहे थे वो अमोघ मंत्र. उत्तम शरणम गोस्वामी, धर्मम शरणम गोस्वामी, संघम शरणम गोस्वामी. उस दिन अपार्थिवता में हृदय को ठोकर हम दोनों स्पंदित रहे थे. आकाश में थमी हुई थी मुट्ठी में. मयूर पंक्ति पर सवार होकर टहल आए थे सूरज की मेघमल्लर. जहाँ सांस लेना बन गया था हमारे लिए गीत. सांस छोड़ने पर बसंत ऋतु डोरी चली आई थी. नवपल्लव सो गए थे हमारे देह पर. नाक पर बाल बांध दिया था. सांप की सरोवर में खीर उठी थी कमल की कली. होले होले टेढ़ी आई थी मदन की मुरली. मेरे कानों पर टपक रहे थे प्रेमालु सुर. ऐसी बसंत ऋतु के लिए हम हजार जन्म लेकर सात सागर तेरह नदियाँ तोड़कर तेज घोड़ा पर सवार होकर तुम्हारे पास आ सकते हैं. आ मिताली, आज वो वहाँ हम यहाँ. यंत्रणा की सांदली में सो गए हैं. प्रेम मेरा नशा है और दुख मेरा निसंगता का विलास. 20 पीलापन स्नान करके सिपा रखा है विषाद की सत सत अरण्य. डुबकी लगा रही हूँ अपार्थिवता में. बुद्धम शरणम गोस्वामी, धर्मम शरणम गोस्वामी, संघम शरणम गोस्वामी. यादें. वर्षों बाद जब कॉलेज के कैंटीन गई थी, साई वालों ने पूछा साई के साथ क्या लो. मैंने बोला पुराना दोस्त मिलेंगे क्या. वर्षों बाद जब कॉलेज के कैंटीन गई थी, साई वाले ने पूछा साई के साथ और क्या लो. मैंने बोला पुराने दोस्त इधर मिलेंगे क्या. प्रेम. यदि तुम मेरे स्पर्श से जीवित हो जाओगी, यदि तुम मेरे स्पर्श से जीवित हो जाओगी, हाँ मैं तुम्हें स्पर्श करूँगी. थैंक यू. और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तुलिका जी पहली नारी है जिन्होंने ब्रह्मपुत्र की यात्रा की है अकेले, और वो लिख भी रही है इसके बारे में. Now the next poet, we have a very young poet, Anandbar Mushahari. He is a Bodo poet, a fiction writer. He has a poetry collection and a short story collection to his credit, besides a few published works in Bodo magazines. He is working with the State Bank of India, and he is already the recipient of the Sahitya Akademi's Yuva Puraskar and Assam Bhasha. So we welcome you, and we are looking forward to listening to Bodo poetry. Please. Good morning.
गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रोमन मुसाले, तो आगे में हिंदी कविता आबृत्ति किया गया है। मेरा भी तो तय विषय होगा इसीलिए ऐसा नहीं सब फोटो मैं पहले कविता आबृत्ति करने जा रहा हूँ और इसके बाद हिंदी भाषा में कविता आबृत्ति करूँगा। दिनैनि निजोम हरा दो उन्दुलांगाखिसै, दिनैनि निजोम खोमसि हराबो सुखुयै आंखौ दो उन्दुलांगाखिसै। मेगन थाइनैयावल' जाखांफैबाय थासै साया माया नोंनि गावदां महरा। नोंनि गावदां महर रैसुमै गाराङा गोसोखौ आंनि खावना लांबाय। गोजोन हराव उन्दुनो लानायाबो सानसुथे जाबाय। मेगन फैसालियाव नों जाखांफैयै गोसो आंनि नोरजिया जाबाय। आंनि मैखोम सोलेर रानफुंबाय, थाइनै मेगनाबो देरब्रंब्रं जालांबाय। नोंनि निजोमसि महरानो आंनि सानहरनि जामुं जानो हमबाय। नोंखौ गोसोखांब्लानो उखैनाय उदैयाबो आबुं जाबाय। मानि मुंनि सारफावबोखो नों आंनि गोसो गोरबो मेगन थाइनैखौ गोसो खाङाब्लाबो जाखांफैबायल' थासै नोंनि निजोमसि गावदां महर। नोंखौ गोसोखाङाब्ला थानो आं दा हालिया। नोंनि निजोमसि गावदां महरानो एमब्रायैनो मोजां मोननो थोनबाय, गोसो थोहोबाय। दा नों आंनि नोजोराव समायना, काश्मीरनि आपेल फिथाइ, भुटान हादोरनि नारें खमला बायदि जोबोर समायना। आंनि मेगन फैसालिनि गोसो अन्दरनि सोलेरनि मोनफ्रोम अंगनि। ये है बोलो है और इसको में हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। आज की अनिद्रा निर्जन रजनी, आज की निर्जन तमिल रजनी मुझे शांति से सोने नहीं दिया। दोनों आंखों में केवल देखा थी तेरा शांति सा रूप यानी सुंदर मुखमंडल। तेरा शांति सा रूप यानी सुंदर मुखमंडल। मधुर बसंतसीन ले गया मेरा मन। रात्रि का सुनायन विश्रांति दोपहर बन गया। आंखों बंद तुझसे होठापुर मन मेरा सुखों से दूर। सूखा तोन भग्नादेश तेरी निर्जनता हो। मेरा दिवारात्रि भोजन बना। तुझसे याद करते हो मेरा भूख मर गया। किस मायाजाल में फंसाया मुझे तू। नयन तन मन मेरा खो गया। बिना तो भी सामने आ गया तेरे निराली शान जैसा रूप यानी सुंदर मुखमंडल। तेरा बिना ज्यादा जीना बना मुश्किल फिदा। तेरे निराली शान जैसा रूप यानी सुंदर मुखमंडल। बार बार पुकारती तुझसे मेरा प्यार हो गया। अब तू मेरी नजर में सायनारा हो। कश्मीर का आपेल हो, भूटान का संतरा हो, बड़ो सुंदर लगती हो। मेरा नयना हो, मन पावन अंतरात्मा का शरीर का प्रति अहंकार। और एक है मुझे पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जल खास ताप से प्राणी जीता है। तप्त सूरज तप्त सावन का ताप रिएक्टर स्केल का 35 डिग्री को ही सहन कर न पा रहा हूँ। खास नहीं ले पा रहा हूँ। कुछ रक्त सब जनित जीते जी मर रहा हूँ। रेगिस्तान के ऊपर भी जल भेटा से पानी की सल्टा जीवन पथ पर। केकड़ा ड्रूम भी ताप से मुरझा जाता। तत्काल एक मधुर हवा का प्रबल मांग है। एक बूंद शीतल जल का मांग है। जोरे प्राप्त को शांत करने के लिए जल चाहिए मुझे। उससे और न सबको पानी ही जीवन है। पानी पीना कोई भी प्राणी बसता नहीं। हमारा शरीर हमारे पीछे पानी पर निर्भर होता है।
जिससे वो प्राणियों को सने रखता है। अक्षय खास मैं भी जी रहा हूँ इस खास से। यह खास जन्म का, यह खास ईश्वर का। इस खास को ईश्वर ने पैदा किया है। इस खास को ईश्वर ने जीवधारियों को प्रदान किया है। प्रकृति को हरियाली रखने के लिए जीता रहता है जीवधारियों। जल खास ताप से विश्व परिवेश में इस मनोहर जगह में। So we heard this young voice. I think we can see the emerging talent already, and we're going to hear much more of you in the future. और हर poet अपनी गीली मिट्टी की महक लाते हैं. So that's the beauty of our भाषा writers. The next writer is Guadalupe Das. She's a Konkani writer, a poet, a translator. She has 8 published books to her credit, including a poetry collection and children's literature. Many of her articles and poems have been featured in Konkani magazines and dailies, and she has transliterated books from Konkani into Devanagari and to Roman script. In the sense that they write the Konkani in both the scripts. Okay, so she's made that contribution. She's served on the editorial board of several Konkani literary journals, and her poems have been broadcast and telecast on All India Radio and Doordarshan. She is the recipient of the Goa Konkani Academy Award not once but twice, and she is the recipient of the Kavya Seva Puraskar, Yuva Srujan Puraskar, Bal Sahitya Puraskar, among others. Please join me in welcoming her. आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैडम, खूबसूरत परिचय के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन सच बात तो ये है कि हम सिर्फ यादें इकट्ठा करते हैं और लोग हमें कवि बुलाते हैं। वैसे हूँ तो मैं गोवा की, पर जब मैं सुखी होती हूँ तब उनके दिल में रहती हूँ और अपने दुख में अपनी कविताओं में पाई जाती हूँ। आज इंटरनेशनल पोएट्री डे के अवसर पर गोवा की कोंकणी कविता यहाँ प्रस्तुत करने के लिए हमें बेहद खुशी हो रही है। तो गोवा के बारे में आप लोगों से क्या कहना, खास करके वहाँ की बारिश। गोवा की बारिश कुछ इस तरह होती है। गोवा की बारिश कुछ इस तरह होती है, एक तो आपको आशिक या फिर कवि बना देंगे। और जब बारिश और आशिक दोनों साथ में मिलने आते हैं तब हमारी कविता कहती है, कहीं भूल ना जाए हम अपनी चाल। हम यहाँ आज 2 कविता हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ने की इजाजत चाहते हैं। पहले हम अपनी कविता कोंकणी में पढ़ेंगे ताकि कोंकणी की मिठास आपके दिल में उतर जाए। कवितेचे नाव असा चुकत माझी चाल। पावसाचे दिसे मोगा तुझ्या यादी सांभाळ। ओले ओले वाटे रोगीच, ओले ओले वाटे रोगीच चुकत माझी चाल। कुपा खूप भेटले, कुपा खूप भेटले, मळबान झोपून पेटले। भावजड भीतर सरचे पहिली, भावजड भीतर सरचे पहिली, काळजा खिळीगार। ओले ओले वाटे रोगीच चुकत माझी चाल। पानान पान भिजतले, पानान पान भिजतले, पाचवे सैम लजतले। पानान पान भिजतले, पाचवे सैम लजतले। हावलांग बांधून घुंगरू, मन धरचे पहिली ताल। ओले ओले वाटे रोगीच चुकत माझी चाल। कोंगे वयर चढतले, कोंगे वयर चढतले, बेसूर बेबे रडतले। कोंगे वयर चढतले, बेसूर बेबे रडतले, यादींची नशा चढून पडत तुका माल। ओले ओले वाटे रोगीच चुकत माझी चाल। नया शेरतेतलो हुमार, नया शेरतेतलो हुमार,
फुलांचोय जातलो भार नयान शेरत्यातलो हुमार फुलांचोय जातलो भार वोटार चढून लाली तांबडे जावचे पयली गाल पावसाचे पिसे मोगा तुज्यो यादी सांभाळ मोर नाचता फुलोन पाका मोर नाचता फुलोन पाका भुये दोण्यात कशी तुका तोल सुटचे पयली म्हजो समजून घे तू हाल तोल सुटचे पयली म्हजो समजून घे तू हाल पावसाचे दिसे मोगा तुझी यादी सांभाळ ओले ओले वाटे रोगीच चुकत म्हजी चाल ओले ओले वाटे रोगीच चुकत म्हजी चाल। अब इसी कविता का अनुवाद हिंदी में पढ़ना चाहूंगी और मेरा मानना यही है कि ट्रांसलेशन करना मतलब इतर जो रहता है तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उतर के ले आना। No matter however hard you try, it's very difficult to get your poem translated to another language. Still a humble attempt. कविता का शीर्षक है कहीं भूल ना जाए हम अपनी चाल। बारिशों के इस मौसम में जरा सी अपनी यादें संभालो भीगी भीगी राहों पर कहीं भूल ना जाए हम अपनी चाल। बादलों में टकराव होगी आसमां में बिजली चमकेगी बादलों में टकराव होगी आसमां में बिजली चमकेगी बूंदाबांदी होने से पहले दिल को जरा कुंडी डाल। बारिशों के इस मौसम में कहीं खो ना जाए हम अपनी चाल। पत्ता पत्ता भी घुटेगा समा भी जरा सा शर्माएगा पत्ता पत्ता भी घुटेगा समा भी जरा सा शर्माएगा पैरों में घुंघरू बांधकर मन पकड़ने से पहले ताल। बारिशों के इस मौसम में जरा सी अपनी यादें संभाल। घोंगे ऊपर आएंगे as you know the snails which go in hibernation they tend to come up during monsoon season। घोंगे ऊपर आएंगे बेसुरे मेंढक रोएंगे घोंगे ऊपर आएंगे बेसुरे मेंढक रोएंगे। यादों का नशा चढ़कर कहीं हो ना जाए आप बेहाल। बारिशों के इस मौसम में जरा सी अपनी यादें संभाल। नदियों में निश्चित आएगी भाड़ बगीचों में भी होगी बहार। फोटो पे लाली चढ़कर हमारे लाल हो जाने से पहले गाल। बारिशों के इस मौसम में जरा सी अपनी यादें संभाल। पंख फैलाकर नाचेंगे वो धरती की आंखों में खुशियों की बोल। संतुलन बिगड़ने से पहले हमारा जानम थोड़ा समझा करो हाल। बारिशों के इस मौसम में जरा सी अपनी यादें संभाल। भीगी भीगी राहों में कहीं भूल ना जाए हम अपनी चाल। ये कविता कहने से पहले मुझे हमेशा लगता है जब तक चुप थी तब तक औरत थी मुंह क्या खोल दिया तो बदतमीज हो गई। और इसी अन्याय का शिकार बहुत सी महिलाएं होती हैं और उनके बारे में हमें तब पता चलता है जब किसी अखबार या किसी मीडिया में उसकी खबर छपकर आ जाती है। तो मेरी अगली और आखिरी कविता है क्यों। कोंकणी में पहले पढ़ने का प्रयास करूंगी। खंयतरी शेकड्यांनी किलोमीटर पयस एका गांवांत त्या हुंवारांत भावून गेल्ले एके अनवळखी अस्तुरे विशीं वर्तमानपत्रांत छापून आयिल्ली खबर वाचून तो कळवळटा। पूण फाटली कितलीशींच वर्सां ताच्याच घरांत एक अस्तुरी दुखाच्या हुंवारांत बुचकळटा। ताचें ताका कांयच दिसना कित्याक तिचे विशीं खंयच्याच दिसाळ्यान आजवेर
खबर छापून येऊं ना मुमकाए। अब इसका हिंदी अनुवाद करने का कोशिश करती हूँ। कहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी गांव में, कहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी गांव में, उस भाड़ में बह गई किसी अनजान औरत के बारे में छपी हुई, अखबार में छपी हुई खबर पढ़कर वे बहुत विचलित हो गए। उस अनजान औरत के बारे में खबर छपी हुई, अखबार में छपी हुई खबर पढ़कर वे बहुत विचलित हो गए। लेकिन उनके अपने ही घर में पिछले कई सालों से एक औरत दुखों के सैलाब से जूझती हुई उनको कभी भी दिखाई नहीं दी। क्यों? उनके बारे में किसी अखबार ने आज तक खबर नहीं छपवाई, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। जब एक औरत बोलती है इस तरीके से तो हम बहुत औरतों की आवाज़ सुनते हैं जो चार दीवारी के अंदर पिटी जा रहे हैं और तड़प रही हैं, and we don't hear their voices. And with every one rape, millions and millions and millions of girls are pushed back into their home. And so I welcome the voice of women poets and men who bring out the voice of the oppressed and the marginalized. I think that is very much the task of poetry today, and that has been brought out so beautifully by our friend here. Thank you so much. The next speaker is Shri Karna Biraha. He is a young Nepali poet. He is a teacher by profession, has been working at the Bijanbari Degree College. He has been writing since he was in school and has 7 poetry collections to his credit already. He is the editor of Rangeet Spectrum and the Bhakti literary magazines. He is already the recipient of Sahitya Akademi's Yuva Puraskar and Shastra Puraskar. Wonderful. So please welcome Karna Biraha. Thank you, ma'am. I'm very happy. हिंदी का समस्या जो नॉर्थ ईस्ट का वैसे ही उच्चारण भी थोड़ा अपनी भाषा में बोले, you don't have to get into हिंदी का समस्या. I want to hear your language. नेपाली में भी ऐसा ही है. कुछ शब्द नेपाली में और हिंदी में से यूज कर. जैसे मेरा फर्स्ट कविता है विकल्प. इसको मैं पहले अपनी नेपाली भाषा में पसंद करता हूँ. विकल्प. एक मुस्कान सुगन्ध ओठमा चेपेर पक्रिँदै गरेको फूल जस्तो, अथवा एक नजर उज्यालो आँखामा टाँसेर झुल्किँदै गरेको जुन जस्तो, अथवा एक फनको शान्ति पखेटामा बोकेर उड्दै गरेको परेवा जस्तो, अथवा एक बुद्ध प्रेम दरबारमा छोडेर जीवन बुझ्न हिँडेको सिद्धार्थ जस्तो, अथवा एक आँसु पीडा मुटुमा खिलेर हाँस्दै गरेको जो कोही जस्तो, अथवा एक जिन्दगी सपना मृत्युमा बिर्साएर जल्दै गएको चिता जस्तो. प्रिय म के जस्तो भइदियो तिम्रो हुनलाई. मैं इसको हिंदी अनुवाद वाचन करता हूँ. विकल्प. एक मुस्कान खुशबू होठों पर दबाकर, एक मुस्कान खुशबू होठों पर दबाकर खिलते हुए फूल की तरह, या एक नजर रोशनी आंखों में चिपक कर उगते हुए चांद की तरह, या एक झोंका शांति पंखों पर लेकर उड़ते हुए कबूतर की तरह, या एक बुद्ध प्रेम महल में छोड़कर जीवन को समझने के लिए चल पड़े सिद्धार्थ की तरह, या एक आंसू दर्द दिल में लेकर हंस रहे हो किसी की तरह, या एक जिंदगी सपने मृत्यु में समेटकर जल रही चिता की तरह. प्रिय मैं तुम्हारी बने के लिए क्या बन जाऊं. और मेरा दूसरा कविता है मजदूर दिवस. मजदूर दिवस के ऊपर है. फर्स्ट में
मजदूर दिवस। आपके खेत खिलने से पहले मैं मजबूत था मालिक। आपका खेत खिलने से पहले मैं मजबूत था मालिक। अब आपका खेत मजबूत है, लेकिन पूरी तरह से फट चुकी है मेरी एड़ियां। मैंने अपनी यात्रा का मांस छिलकर आपकी खेत के धौ को भर दिया है। नहरे ना सूख जाए सोचकर, हाथी छालों को निचोड़कर मवाद बाहर निकाल दिया है। सूखा न पड़ जाए सोचकर अविरल पसीने के बूंदे गिरा दिया। अब आपका खेत जितना हरा भरा है उतना ही खाली है मालिक मेरा पेट। आप कहते हैं कि बोझा ही उठा सकते हैं मेरा सिर। आप कहते हैं कि बोझ ही उठा सकता है मेरा सिर, लेकिन आपका बड़ा सिर है ना, मेरा ही सिर में लटक कर चलते हैं मालिक। इसी सिर पर लटक कर मर जाता है हर दिन आपके परिवार की भूख। आपके बेटे का अंग्रेजी स्कूल का किताबों का वजन और मेरे बेटे का ICDS की खाली प्लेट का वजन, इस सिर को दोनों बराबर लगते हैं मालिक। जिस तरह पृथ्वी और बोझा दोनों ही सपाट लगते हैं इस सिर को। जिस तरह आप विभेद करते हो आप और मेरे भोजन में, ठीक उसी तरह आप और मेरे भूख में विभेद कर नहीं सकोगे। आपके कारखाने से उठा काला धुआं, आपके कारखाने से उठा हुआ काला धुआं या आपकी सिगरेट से निकलने वाला सफेद धुआं और मेरी बीड़ी से निकलने वाला गंदे धुआं एक हो जाने के बाद आप अलग कर नहीं सकते मालिक। आप और मेरे फेफड़े में जमे हुए मेल भी तो एक जैसे है, आप उसे भी अलग कर नहीं सकते। फिर क्यों विभेद करते हो? एक ही साथ गुड़िया खेल रही आप और मेरी बिटिया को। मैंने अपने माथे में विराजित सूरज को निकालकर आपके आकाश में लटका दिया है मालिक। मैंने अपने माथे में विराजित सूरज को निकालकर आपके आकाश में लटका दिया है मालिक। इसलिए तो मेरे घर की छत हमेशा टपकती रहती है और मेरा माथा भी, आंखें भी हमेशा मेरा ही टपकती है। खैर बाकी सभी दिन आप ही के हैं मालिक। खैर बाकी सभी दिन आप ही के हैं मालिक। सिर्फ यहाँ एक दिन है जो आज मैंने खुद अपने लिए रख दिया। और मेरा अंतिम छोटा कविता का शीर्षक पाषाण युग, स्टोन एज। पुराने लोग पाषाण युग में रहते थे। लोग पत्थर पर इतने निर्भर थे कि उन्होंने पत्थर की गुफा को अपना घर मान लिया था। इसलिए जीवित रहने के लिए उन्होंने पत्थर को हथियार बना लिया था। वह दिन भर पत्थर से शिकार करते, शाम को सबके साथ मिल बांट कर भोजन करते और पत्थर के तकिए पर चैन से सोते। वह दिन भर पत्थर से शिकार करते, शाम को सबके साथ मिल बांट कर भोजन करते और पत्थर के तकिए पर चैन से सोते। न जाने बाद में उनको क्या हो गया, न जाने बाद में उनको क्या हो गया। समय ने सभ्यता का फंदा उनके गर्दन पे बांध दिया। अब लोग फिर से पाषाण युग में लौट गए हैं। अब लोग फिर से पाषाण युग में लौट गए हैं। उन्होंने फिर से पत्थर को हथियार बना दिया है और एक दूसरे के घर उजाड़ने लगे हैं। You just heard the voice and the pain of the people in his poetry. I wish that your poems come in all the textbooks of India. Thank you very much. Miss Santosh Maya Mohan. She is a well-known Rajasthani writer. She started writing in 1995 and since then her poems have regularly been published in different literary journals and magazines. She has a poetry collection titled Simran to her credit, for which she has received the Sahitya Akademi Award. The book has
translated in Hindi as well, and she has also been honored by the Meera Rajasthani Sanstha and Rajasthan Shikshak Sangh. Please welcome Santosh Maya Moore. And please don't call me ma'am, I am Sagari to everyone. परम आदरणीय सभागार, हिंदी और राजस्थानी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं कविता आपको एक ही भाषा में आपको ही सुना दूंगी। मेरी सारी कविताएं जो है वो प्रकृति और पुरुष, ब्रह्मांड, शिव थे, हूँ प्रकृति हूँ मैं, शिव थे, हूँ चढ़ाऊं था माथे आत्म पे, कि शिव हुआ और मैं आप पर अपना फूल चढ़ाती हूँ, खुद को फूल, कि शिव थे, हूँ चढ़ाऊं था माथे आत्म पे, बरपाऊं सृष्टि रह सृजन को। मैं जब आपको सौंप देती हूँ तो मैं इस सृष्टि का सृजन करती हूँ। लीलाधर थे, हाड़ी थे, संभालो थारा पुरुष लोक रक्ष, कि आप हाड़ी हो कामगार, तुम संभालो अपने लोक रूपी उपकरण, अने उतर जाओ धरती रे पेट तसा द्वारा रे बीज रे, नस्वर माय अनस्वर की खोज, अनस्वर माय नस्वर की खोज, खिला जाओ हरे रीते खड़ा अलेखू बीज, असीजर लीला धरते इनी लीला रचे हरी लीला, रचे हरी लीला। समझ में आ रहा है? ओयुरी हथेलियां यादों के मारी आंखों माथे राखो थे सारी ओयुरी हथेलियां, मेरी यादों पर तुम अपनी यादों की हथेलियां रखते हो, हमारी आंखों माथे राखो थे थारी ओयुरी हथेलियां, हमारे अंतस्माय उतरे निकड़ू दूध रा धारा, हमारी आंखों माथे राखो थे थारी ओयुरी हथेलियां, हमारे अंतस्माय उतरे निकड़ू दूध रा धारा, जिन्हें उजाड़े मैं देखूं आपको ब्रह्मांड, थारो विराट रूप और दर्शन कर तारा। मेरी कविताएं छोटी छोटी हैं तो थोड़ा सा तेज खोलो सीप आपके ज्यादा होती है, तेज खोलो सीपरी पंखा, तेज बढ़ो स्वाति नक्षत्र, तेज खोलो सीपरी पंखा, तेज बढ़ो स्वाति नक्षत्र, तेज करो मोतियां फूक, मोती को कौन करता है? तेज खोलो सीपरी पंखा, तेज बढ़ो स्वाति नक्षत्र, तेज करो मोतियां फूक, इंद्र के तेज समुद्र। आओ थे झूठो थोड़ी ताल, थारे आवन जावन रे आसा, आओ थे झूठो थोड़ी ताल, थारे आवन जावन रे सांसा, बीजू मैं थारे पावन परस, पूछू थारे सांसानी बहेलियां, भोगू थारे अद्वैत शु द्वैत ओमनली पीर। एक और कि ये जो प्रकृति है इसमें कौन आप मेरे नीले गब है, चांद सूरज का टांगा फूल, ये चांद सूरज है, इनके फूल किसने टांगे? कौन आप मेरे नीले गब है, चांद सूरज का टांगा फूल, कौन आप मेरे नीले गब है, रीत नाक की धरती पर झूल, कौन आप मेरे नीले गब है, चांद सूरज का टांगा फूल, कौन आप मेरे नीले गब है, रीत नाक की धरती पर झूल, कौन करे है सासू चिंता, कौन है ऐसो कोई रंगरेज, कौन करे है सासू
गावे रीना की धरती पर झूल कुण आप है रे नीले गावे गावे रीना की धरती पर झूल। Thank you, my dear. Next poet is Shalini Sagar. She is a noted Sindhi writer and social worker. She has published 6 books and she has translated many books besides research papers, short stories and poems in literary magazines and souvenirs. She has prepared special programs for All India Radio and she has interviewed several prominent personalities of India Listen. Her poems have been included in the syllabus of Gujarat and Rajasthan Secondary Education Board. She's edited a children's magazine, Jhirimir, for Delhi Sindhi Academy and brought out audio cassettes in Sindhi and Urdu languages for visually impaired students. She's the recipient of the award for excellence from the Sindhi Academy. नमस्कार। वर्ल्ड पोएट्री डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके अलावा नया साल शुरू हो रहा है चैत्र, तो चैत्र नया साल जिसको हम लोग चेटीचंड कहते हैं, गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे मैं सुन रही हूँ कईयों ने औरतों के इशू के ऊपर अपनी पोएम्स पढ़ी हैं, तो मैं भी एक पोएम इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक कुछ मेरे भी भाव है, मैं आपके सामने पेश करूँगी। उसकी कुछ लाइनें पहले मैं सिंधी में पढ़ूंगी, उसके बाद उसका फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। मेरी इस कविता का उन्वान है रिजर्वेशन। ये पार्लियामेंट में रिजर्वेशन का बिल उसके ऊपर काफी चला था, तो उससे रिलेटेड है। अजमातों के सो कॉल्ड रिजर्वेशन, अजमातों के सो कॉल्ड रिजर्वेशन मुख्य दानत और झोलियों में विचरण का आजाद तैयार थी। अजमातों के सो कॉल्ड रिजर्वेशन मुख्य दानत और झोलियों में विचरण का आजाद तैयार थी। मां हैरान आया तुझी सोचती त तू आज पार्लियामेंट में बिल पेश करे मुझे हेठी से रिजर्वेशन महफूज करना चाहिए, पर हूँ तो के गंधन का आजाद करे। थोड़ा सा मैंने इसका ओपनिंग पढ़ा है, अपने इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ी। आज मैं तुम्हें तथाकथित आरक्षण, आज मैं तुम्हें तथाकथित आरक्षण सो कॉल्ड रिजर्वेशन मेरे लिए भिक्षा के रूप में झोली में डालने से आजाद करती हूँ। आज मैं तुम्हें तथाकथित आरक्षण सो कॉल्ड रिजर्वेशन मेरे लिए भिक्षा के रूप में झोली में डालने से आजाद करती हूँ। मैं हैरान हूँ तुम्हारी इस सोच पर, मैं हैरान हूँ तुम्हारी इस सोच पर कि तुम आज पार्लियामेंट में बिल पेश करके मेरे लिए 33% आरक्षण महफूज करना चाहते हो। मैं हैरान हूँ तुम्हारी इस सोच पर कि तुम आज पार्लियामेंट में बिल पेश करके मेरे लिए 33% आरक्षण महफूज करना चाहते हो, पर आज मैंने तुम्हें इस तथाकथित आरक्षण के बंधन से मुक्त किया। जरा सोच तू मेरी ममता में भी रिजर्वेशन का बीज होता, जरा सोच तू अगर मेरी ममता में भी रिजर्वेशन का बीज होता तो ये धरती तुम्हारे जैसे अभिमानी पुरुषों के अत्याचार से आजाद होगी। मैं बहन, मैं बेटी, मैं बहन, मैं बेटी, मैं ही जननी, मैंने ही जन्म दिया है तुमको। मैं बहन, मैं बेटी, मैं ही जननी, मैंने ही तुमको जन्म दिया है। तुम क्या मुझको दोगे, तुम क्या मुझको दोगे? आदि युग से मैंने तुम्हारे लिए किया है और आइंदा भी करती रहूंगी। आदि युग से मैंने तुम्हारे लिए किया है और आइंदा भी करती रहूंगी। तुम तो खुद मेरे प्यार, मेरी करुणा, मेरे दूध की कर्जदार हो। तुम तो खुद मेरे प्यार, मेरी करुणा, मेरे दूध की कर्जदार हो। ये पार्लियामेंट में आरक्षण बिल पे हमारे किसी पॉलिटिशियन ने कहा था कि औरतों को रिजर्वेशन मिले वो काम नहीं करेगी, जबकि ऐसा है। तो ये उस कविता का रिएक्शन उनके स्टेटमेंट के बाद था।
मेरी एक और कविता है प्रवासी पक्षी। अखंड भारत का एक हिस्सा सिंध था। सिंधी भाषा से लोग वहाँ से जो निकल के इधर आगे भारत में आ गए और हमें अपनी जमीन नहीं मिली। सिंध टोटली उधर चला गया। पंजाब को कुछ हिस्सा यहाँ पे मिल गया, पंजाब आधा उधर के आगे गया। तो ये भी मेरी उस अपनी जो पोइट्री है, मेरा जो दर्द है अपनी जमीन सरजमीन से जुड़े हुए रहने का और उससे अलग होने का, उसका इसमें बयान किया गया है। प्रवासी पक्षी इस कविता का उन्वान है। प्रवासी पक्षी। जाड़ों में जब दिन छोटे और होती हैं रातें लंबी, जाड़ों में जब दिन छोटे और होती हैं रातें लंबी, हर साल सुदूर हिम प्रदेशों से, हर साल सुदूर हिम प्रदेशों से उड़ते हैं प्रवासी साइबेरियाई पक्षी ऊंचे आसमान की। हर साल सुदूर हिम प्रदेशों से उड़ते हैं प्रवासी साइबेरियाई पक्षी ऊंचे आसमान में। सागर, पहाड़, मरुभूमि की हजारों मील की दूरी लांघकर पहुंचते हैं भरतपुर, राजस्थान, नांगलबान, पंजाब जैसी जगहों पर। सागर, पहाड़, मरुभूमि की हजारों मील की दूरी लांघकर पहुंचते हैं भरतपुर, राजस्थान, नांगलबान, पंजाब जैसी जगहों पर सुख से जीने ठहरने के लिए। सुख से ठहरने जीने के लिए मौसम बदलते ही ये प्रवासी पक्षी लौट जाते हैं जन्मभूमि की ओर। मौसम बदलते ही ये प्रवासी पक्षी लौट जाते हैं जन्मभूमि की ओर। लेकिन मैं वो बदकिस्मत इंसान हूँ, लेकिन मैं वो बदकिस्मत इंसान हूँ जो अखंड भारत के बंटवारे के कारण छोड़कर पुश्तैनी घर आ बसा हूँ यहाँ। अखंड भारत के बंटवारे के कारण छोड़कर पुश्तैनी घर आ बसा हूँ यहाँ। दो उदास नैन मेरे, दो उदास नैन मेरे आंसू और दर्द से भरे लबालब, सिर्फ और सिर्फ देखते हैं दूर सरहद के उस पार से। सिर्फ और सिर्फ देखते हैं दूर सरहद के इस पार से जन्मभूमि को। प्रवासी ये साइबेरियाई पक्षी अधिक है खुशनसीब। प्रवासी ये साइबेरियाई पक्षी अधिक हैं खुशनसीब। जैसे ही बदलता के मौसम, जैसे ही बदलता के मौसम लौट जाते हैं मातृभूमि की ओर। किंतु विवश में बटा हुआ हूँ दो मुल्कों की सरहदों में। किंतु मैं विवश बटा हुआ हूँ दो मुल्कों की सरहदों में। अगर टाइम है तो एक छोटी सी What time do we have to finish this session? 3:30. Okay. ये मेरी बेटी की शादी हुई तो उसके जाने के बाद उस वक्त जो मेरी फीलिंग थी, मैंने उस बेटी की शादी के बारे में लिखा। हंसनी इसका मैंने वही सपने आज साकार किए। कल तक जो हंसनी मेरे घर की शोभा थी, कल तक जो हंसनी मेरे घर की शोभा थी, वही आज अपने खगवृंद से बिछुड़कर, वही आज अपने खगवृंद से बिछुड़कर और झुंड में जा मिली, और झुंड में जा मिली। रफ्ता रफ्ता उस नए खगवृंद के झुंड में, रफ्ता रफ्ता उस नए खगवृंद के झुंड में यूं घुल मिल गई कि मेरी नम आंखें, कि मेरी नम आंखें उस वृंद में अपनी हंसनी को ढूंढने लगी। उस नए खगवृंद के झुंड में यूं घुल मिल गई कि मेरी नम आंखें उस वृंद में अपनी हंसनी को ढूंढने लगी। मेरी हंसनी उस नए खगवृंद के झुंड में यूं रच बस गई कि धीरे धीरे मेरी नम आंखों से ओझल होती गई, कि धीरे धीरे मेरी नम आंखों से ओझल होती गई। And now we have the voice of a Telugu poet. I mean, K. Shrikant. He is a noted Telugu. He's been teaching English for the last 26 years, and presently he is an associate professor of English at Government City College, Hyderabad.
His interests include contemporary theory, philosophy and translation, and apart from publishing widely in reputed Telugu magazines and newspapers, he has to his credit 6 volumes of poetry. He is the winner of the Katha Award for the Best Fiction 2002 for his story, The Silent Song. Shrikant. Let's welcome him. Thank you, Akademi, and thank you, the chairperson. A little autobiographical note before I read 2 or 3 poems from the latest volume. It's a kind of Latin word, madre, which means mother. This is a collection of poems on my mother. I'll read one poem in Telugu in my own language, and then perhaps maybe 2 or 3 poems from this work translated into English. Unfortunately, I'm not good at Indian, and I do not do that translation. Doesn't matter, we listen to you and your mother tongue. Yeah. A little bit of autobiographical know that, so that it will be much more easier to understand the emotional backdrop of these poems. My mother is 72 now. She was a working woman and is a working woman in the sense that earlier she used to work at an office. She is retired from the office, but the work never stopped. Work that is often goes unacknowledged, work that is not recognized, and the work that often goes unnoticed as well. Right. As I said, my mother is 72. She is not well. She recently lost the eyesight of her left eye due to the damage of a nerve issue. Now she can only see with one eye, and she says that even that is waning. Her health is deteriorating. Perhaps one is forbidden to say, but at times it appears to me that as if I have become a new spectator to the oblivion into which she is sinking gradually. It appears to me as if she is counting her days. And it won't be long that she will be erased by time. So this is the kind of little backdrop to which most of these poems have been written. I'll just read one poem in Telugu, and then I'll try to do 2 or 3 more poems in English. First one is called Shadow, Needa in Telugu. Amma ఉద్యోగానికి వెళ్ళేది, అన్నము పప్పు ఇవి మాత్రమే చేసేది. మధ్యాహ్నం స్కూల్ నుంచి వస్తే నాకు ఆ వంటగదిలో ఒక నీడ కనపడేది. చిరిగిన ఒక పర్సులాగా ఉండేది ఆ నీడ నల్లగా. అమ్మ ఉద్యోగానికి వెళ్ళడం లేదు ఇప్పుడు, అయినా అదే పప్పు అన్నం, కానీ కర్రీ పాయింట్లో అదే నల్లని ఆ ప్రేమారాహిత్యపు నీడ ఇప్పటికీ తన చుట్టూ చిరిగిన పర్సులో దాచుకున్న అతని ప్రియమైన ముఖం లాగా. Now I'll read 2 or 3 poems from this volume in translation. The first one is called Cold Moon. My mother sits in the veranda and stares at the full moon through the branches of a neem tree. Her face glistens. Her face is a reflection of a yellow moon in a lake on a cold, cold December night. Leaves rustle, wind blows, and as she looks at me, I know. It is true that the face that looks at me now will be washed away to that other shore, and I will be left alone with the cold, cold December moon on a cold, cold December night, as white as tonight. The second one, this is called guilt. Instead of giving the background, I hope the poem is self-explanatory. You did not notice it then. Perhaps you were too busy with yourself. Perhaps a week might have passed since then. Perhaps you were struck
in the cracks of the day or sank into the quicksands of the recurring nights. You did not notice it then. But as you wear your washed and ironed trousers, and as you push a handkerchief into your pocket, you feel it. A piece of paper, like a marble made of paper, the medical prescription that your mother gave you a week back and said, son, do get these medicines as soon as possible. The pain is unbearable. And then the recognition hits you, and the guilt devours you like a thunderbolt. Like her painful face, and finally like the eyesight of a life that she had lost forever. The third one, translation of the Telugu one that I have read, it's called Shadow. My mother used to go work. She only used to make rice and dal every day. Whenever I came home from school for lunch, I used to see a shadow in the kitchen, a black shadow. And it used to be like a tall purse of my mother. My mother does not go to work anymore. My mother does not go to work now anymore. She is retired and she is old. But after all these years, she still eats the same rice and dal. The same rice and dal that was not made by her but purchased at 30 points. Wow. And the same shadow of lovelessness still lingers in the house. Like the photograph of a loved one that she hid in her age-old torn black purse of her heart. Wow. Last one. It is a bit away from this mood. This is called As We Get Old. Once again, an autobiographical poem. This is about me and my wife. Let me be open about it. These days we don't say much to each other. Perhaps a word or two. That too through a message. Like, have you reached? Like, did you have lunch? Or did you start? Or it's late. Where are you? Or it could be a simple hi. Or come soon. I am waiting for you. Or sometimes it could be just 3 dots. You know, those 3 dots are the musical notes of time, of the past, present and future. These days we don't say much to each other. I know that we are getting old, and such that we have finally found a way to reach the fragrance that lies beyond the words and sounds. A silence that shines through the dew like the morning sunlight, and such that after all these years of living together, we have learned this art of love, this art of being, by listening to the muted songs of our longing hearts. Thank you. I think you just heard the voice of the true poets of India. Poetry is alive and well. Whether it's being published or not, I don't know. But the very fact that we have the Nepali writer who brings forth the pain of the mazdoor, you know, the dripping of the water from the hut and उसके माथे से जो गिरता है, वो जो दर्द महसूस होती है, the pain of watching his mother become a shadow, going into oblivion, as we all will, and refuse to accept.
The fact that when a woman speaks, वो बदतमीज बन जाती है, जब वो चुप रहती है तो बहुत शरीफ होती है। हर वक्त हम लोगों को ये विडंबना में हम रहते हैं कि हम चुप रहें या बोले। Excuse me? हर वक्त सिंधी राइटर ने आपको बताया वो फीलिंग ऑफ लॉस की, उसकी बेटी ने घर बसाया है और उसकी याद सताती है। We heard the Assamese poet, the Bodo poet, and the Rajasthani poet. Each with their, वो जो गीली मिट्टी की महक, उनकी आवाज में से ब्रह्मपुत्र, उनकी आवाज में से नॉर्थ ईस्ट, उनकी आवाज में से राजस्थानी की शैली, वो सब भाषाएं में एक अपनी कुछ महक है। That we cannot, as she said, कि if you try to translate वो इत्तर जो है एक बोतल से दूसरी में बोतल में डालने में वो कुछ ओरिजिनल बोतल में रह ही जाती है, पर फिर we crave to hear, we crave to smell, and that is poetry. Today we've had a beautiful session, and I will end with some of my own poems. मैं अंग्रेजियत की जिंदगी नहीं बिताती हूँ, मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ। Let my poems speak for themselves. This one is called Catastrophe. It's a published piece of work, but I've brought it out in print here. The war in Ukraine. This one is called The War in Ukraine. What is a catastrophe? Asks my child. When you turn humans into wild cats and asses, then hand each a trophy of arms. My child notes this with a sense of calm. Then turning her face towards me, she asks, what is a collateral damage? When you tell a grieving woman the home she built with all her savings has just been bombed by a cluster's shavings. But why do you need to know this, I venture to ask? I am doing my home task. These are some blanks my teacher has asked me to fill. How many people must we kill to know we have ended the dash race? What should I write in this space? Tell your teacher there are some spaces no one can ever fill. How does one occupy the void of a mother's presence? A child's prattle who hears the bugle of his father's martyrdom as a death rattle. There are no blanks when the shots are fired, for the whole world has been mired in self-destruction and grief. Stop this war for the sake of our children is my brief. How many graves will the soil bear? How many rivulets of tears will the wind dry? Turning to sigh, when will they ever learn? Wow. This one is called The Earth Speaks at Joshimath. This is after Joshimath started singing and all the houses started breaking. From jagged lightning, furious sounds emerged, falling on the earth in drops so huge they transmuted the entire landscape from which there was no escape. They said the tracks were due to a tectonic shift and glacial debris. Notwithstanding the frenzy, the earth, who had long been held captive in silence, could not withstand the enormity of the violence. She finally spoke. You have invented the new mark. Who is that? I asked in awe. The new machine. Now watch the sheen of the glacier fade, the clouds overfilled with water as you bade them to envelope me with heat and gas. For it was money, alas, you tried to amass. Don't tell me now. You can't stand the land slippage, the oceans warming, the sinking of the town. Did you take me, the living earth?
to be a noun of passive voice while you kept raising an invoice with cash registers ringing? It is you who have been bringing in the sixth extension. You have the distinction of feigning dismay. But remember, the mountain will not remain a silent witness. The mountain speaks. It issues cracks with a whiplash. It smashes your bullying and dozing development, your tunnel vision, fracturing the land into a fissured division. It tells you to go back to the plains. It tells you plainly, or simply, all this will come to an end. And my last poem, and then we will leave the floor open to discussions because we must hear everyone. It's called The Tree's Gift. One day, the tree, tired of staying rooted on the brown soil, decided to foil the onlookers who rushed by in the traffic of haste, leaving footprints of waste, never paying any heed to her inner beauty. She saw her fragrant pink pistils, discarded for pistols. Her stamen, stamped by men in boots, who climbed out, constructing a security hatch, sensing a plot to kill a dignitary. All this damaged her dignity. She stood alone, quite forlorn, stocked her offerings of flowers, shoes, and leaves in abundance, watching the armed commandos take over with abandon what was once a free and fragrant land. No one noticed that the tree had stopped growing. There was no knowing. Her roots had been snarled by the concrete onto which were parked a fleet of fossil-fused cars. No one gazed at the stars. There was so much smog, nor could they see beyond the fog of dirt and pollution. Their very own creation. Nurturing nature was just an ideation of the past. They were hurtling so fast, watching the Sensex rise. Amid stars of glass and steel, no one could feel. The temperature had risen as well. No one could tell. The tree could not speak the language of men. She only knew the birds had stopped flying. This was not yet summer, but the men were marching to the roll of a distant drummer. When the avalanche occurred mountains away, burying many in the snow, the sea waves rose, a formidable foaming foe. Coastlines were flooded, homes inundated, but no one could hear or even feel the language of the tree. She seemed to be telling humanity, let the stamen and pistil stay fragrant. Stay your flagrant hand, O man. You do not own the earth, you belong to it. Then she shed her leaves as a gift, creating a mound for a grave unfound. So now we leave the floor open to the voices of the poets. Anyone who wants to say or read, I think we have so much prose in our lives that we should not take away the voice of poetry. So if anyone would like to read another poem or anything poetic, we would welcome that because we have so much talent in our midst. We have some talent. I think it will be beautiful. If you want to read, that's it. Shall we have one poem from each poet again? Can we do that? You can. Yeah? चलिए Instead of हमारे नेपाली दोस्त when you हाँ translation. you don't have to. एक और just one everyone one अपना keep it to 2 minutes everyone will have I always feel that, poets are the most marginalized people in the world. They have
butterfly. And I think it's really important to have those recordings and to hear the voice of poetry. It exists, you just have to have an ear for it. So if you're not ready, the Telugu poet, one more, each one more. Yeah? Get ready. Get ready. Who is ready? You, but yeah, you start. हाँ, अपनी भाषा. जब छोटी थी तब ख्वाहिश रखती थी बड़ी हो जाने की, और बड़ी हो गई. बचपन चला गया और बचपना साथ लेके घूमती हूँ. इसी आधारित एक कविता. शीर्षक है भुरगेपण. भुरगेपणात शेता बांदार इश्टा वांगडा सारले की. भुरगेपणात शेता बांदार इश्टा वांगडा सारले की. जांभळी मुळात जांभळां खाईत रंगयाळी केलीची. वय वाढले सगळे सांडले. वय वाढले सगळे सांडले. सांडले बांद सांडली शेतां. सांडले बैल सांडली जोतां. सांडले सगळे इश्ट तरी. सांडले सगळे इश्ट तरी काळजार अजून जांभळे खाता. बिकाळ कांडा तांबडीच भिंडा. बिकाळ कांडा तांबडीच भिंडा खातनाची वेगवेगळीच मजा. डोंगरावेले काणगिणी. डोंगरावेले काणगिणी पावस गालगे सायबिणी इश्टा वांगडा केली पूजा. आयलो पावस. आयलो पावस भरली तरी उदक जाले जळीमळी. भिंडा खाऊन थांबडेच चालले. भिंडा खाऊन तांबडेच चालले. इश्टाचे चेहरे सुकता. सांडले बांद सांडली शेतां. सांडले बैल सांडली जोतां. सांडले सगळे इश्ट तरी जिबेर अजून जांभळी खाता. डोंगर माडीत वाटो घडयत. डोंगर माडीत वाटो घडयत इश्टागतीक आयले फाटे. केळी पानार सुका वांगडा दुःखाचे केल्ले फाटे. डोंगर माडीत वाटो घडयत इश्टागतीक आयले फाटे. केळी पानार सुका वांगडा दुःखाचे केल्ले वाटे. आता डोंगर जाल्यात बोडके. आता डोंगर जाल्यात बोडके. काळजाचे हजार बुडके. इश्टा वांगडा माडयल्ले वाटेर हांव घुस्पतां. सांडले बांद सांडली शेतां. सांडले बैल सांडली जोतां. सांडले सगळे इश्ट तरी काळजार अजून जांभळी खाता. काळजार अजून जांभळी खाता. पोस्टल एड्रेस जिसको सिंधी में सरनामा कहते हैं. सरनामा. हाँ, सरनामा. वो कविता का उन्वान है. और इसमें जो हमारे साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर्स है राइटर्स उनका जिक्र किया है कि वो लोग सिंधी के यहाँ आते हैं. जी सिंधी हाँ छदे पंहिंजा घर अबाणा. छदे पंहिंजा घर अबाणा वरी वसण सवलो न आ. छदे पंहिंजा घर अबाणा वरी वसण सवलो न आ. करे सिंध खे अलग सिंधियुनि खां. करे सिंध खे अलग सिंधियुनि खां क्यों दरबदर तेरी पीढ़ी. कई पीढ़ियाँ जो है वो शुरुआत की. हम लोग तो खैर बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग इसका जो टाइम था डिफिकल्ट टाइम वो निकल चुका है और हमें अब सबके साथ में हम लोग हैं. करे सिंध खे अलग सिंधियुनि खां क्यों दरबदर तेरी पीढ़ियूं. छिके ॼण कढियो हुजे कंहिं रूह जिस्म मां. छिके ॼण कढियो हुजे कंहिं रूह जिस्म मां. तुंहिंजी मिटीअ जो भोॻाव थो रचे बसे रूह में. तुंहिंजे मिटीअ जो भोॻाव थो रचे बसे रूह में. हुजे खां गर ज़बान कराची हैदराबाद लाड़कानी थी. ये शहर कहाँ की है. अगर उनको ज़बान होती तो वो अपने जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके नाम लेके कहते कि वो यहाँ के असली वारिस हैं. हुजे खां गर ज़बान कराची हैदराबाद लाड़कानी थी. वॾे बाटे चवन हां. हुजे खां गर ज़बान कराची हैदराबाद लाड़कानी खे वॾे बाटे चवन हां. आहिनि सिंध जा असली वारिस. आहिनि सिंध जा असली वारिस. दिलगीर दुखायल वफा एरा. ये सारी साहित्य अकेडमी के अवार्ड विनर को इसके नाम है. आहिनि सिंध जा असली वारिस. दिलगीर दुखायल वफा एरा की. छॾे पंहिंजा घर अबाणा. छॾे पंहिंजा घर अबाणा सिंधी थिया वेंदाणा. अला करे कुर्ब. अला करे कुर्ब
सिंधियुनि जे घर मथां सरनामो ही नओं लिखंदा। ये नया पता वहाँ जाके जो पुरानी हमारे घर है उनके ऊपर जाके ये लिखना। हाणे था रहन सिंध जा वारिस। अब सिंध के जो असली वारिस हैं जो माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं, हाणे था रहन सिंध जा वारिस, दिल्ली, मुंबई ऐं अजमेर। अब उनका घर का ठिकाना राजधानी कराची, हैदराबाद नहीं रहा है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, अजमेर, they are scattered all over India. हाणे था रहन सिंध जा वारिस, दिल्ली, मुंबई ऐं अजमेर। ज़ख्म त भरिजी वेंदा मगर, ज़ख्म त भरिजी वेंदा मगर, निशान जिस्म ऐं रूह ते सदा सिंधियुनि जे रहंदा। ज़ख्म त भरिजी वेंदा मगर, निशान जिस्म ऐं रूह ते सदा सिंधियुनि जे रहंदा। ज़ख्म त भरिजी वेंदा पर निशान सदा जिस्म ऐं रूह ते रहंदा। थैंक्स। No, we have 5 minutes more. Come, Tulika, then we have Telugu food. Yeah, after Tulika. We have and then the Bodo food. সেউজীয়া সোণৰ দেশ, সেউজীয়া সোণৰ দেশ, ইকান সিকানকৈ বাগৰি হাতী পথাৰ দৰে এখন সোণৰ দেশৰ। সোণ আছে, ৰূপ আছে, হীৰা আছে মাটিৰ তলত, উঘালিতে কৰিব নিশা। সোণোৱালী সমূহ এটা বুকুত বান্ধি, ৰ'দ ভাল পোৱা মানুহৰ সমতল এটা আঁচনি। ঝকঝক ঘূৰি শেষত ভাৱনাও অথবা জাহাজ, অন্যথা খোজকাঢ়ি আহি থাকিল মানুহবোৰ। অনিৰ্দিষ্ট এক যাত্ৰাৰ মাজত সময় থাকিল, যাত্ৰাৰ প্ৰদীপ জ্বলি। ঘৰ নাই, ভাত নাই, হাতত শিকলি, ভৰিত বেৰিয়া, চাবুকৰ কোবত লক্ষ্মীৰ যৌৱন উলংগ হ'ল। বগা চালৰ মানুহবোৰে তাইক আঁচৰিলে, ৰেপি ৰেপি নিমখ দিলে, তেলত দিলে। যথৰখন চাই থাকিল বুধুৱাই, প্ৰতিবাৰৰ উত্তৰ যে ঋদ্ধ। হেৰুৱাই থৈ সপোন, হেৰুৱাই আপোন মানুহ, বন্ধকত থৈ আত্মা, মানুহবোৰ আহি থাকি সোণৰ দেশ আহি পাওঁতে পাওঁতে মানুহবোৰ বোবা হৈ পৰিল। লাহে লাহে চাবুকৰ শব্দত ৰাতিপুৱাবলৈ ধৰিলে। অৰণ্য ভাঙি, ধাননি পথাৰ গুচাই এটিকলি দুটি পাতৰ মাজত সপোনৰ শিপা মেলি। শিলকৰ চাহ প্ৰেম কৰি, স্বদেশে ৰিঙিয়াই মাতিলেও, ফাঁকি দি আছাম আনিলেও, অসম দেশৰ মুখে সিহঁতক আৱৰি ধৰিল। নৈ শব্দৰ আকাশত মাদল বাজি উঠিল। গৰমৰ ৰাতি অনাকৰি অৱহেলিত মানুহখিনিয়ে ঝুমুৰ নাচি নাচি ভাগৰি নপৰে। পাগলা বজাৰত শাৰী খাৰু মণি কিনোতে ভাগৰি নপৰে। শাৰীয়াতি শক্তিমান সিহঁত, কোনোদিন ভাগৰ নলগা সুখীত লঞ্চিত এটা জাতিৰ নাম বাগানীয়া। ফিকা চাহত নিমখ দি খোৱা এটা জাতিৰ নাম বাগানীয়া। মানুহ নহয় ইহঁত যেন ইতৰ প্ৰাণীহে। ফাঁকি দি অসম আনিলেও অসমৰ মুখত সিহঁতি বিধ্বস্ত। অসমৰ ভাল পোৱাই সিহঁতক মোহিত কৰে। ফাঁকিতে দিয়ে জীৱন, ফাঁকিতে শেষ হয় সিহঁতৰ অনন্ত জীৱন। ধন্যবাদ। I don't know if you're winding up. Do you have time or for a little? Okay. Are you ready? I think our boys are very shy also. खामलावनाय गोरबो रुबायाव रैद्रोब बारा जेब्ला बिरो नोंनि सोलेरखौ समायना नुयो आंनि मेगन जरायाव नोंखौ लाइमोन बैसोनि दुबथिंनायाव जायो गोसो आंनि खाथियाव मोनो नोंखौ उन्दिसानाय निहोरखौ फोजाफैयो फुंबिलिनि जारौ साना गोजोन होयो हरसे उफ्लेनाय गोरबो बिखा नोंनि आंनि बयनिबो जिउखौ निंखौ जौनि निसाजों बारहोयै लोरलाज्रब जालाङो बिखाया इनायै नोंनि दांनाय बिलिरनायाव गावखौनो बावगोमालाङो हरसे थारलायै दा आं नोंनि थाखाय बेंग्रा मोजां मोनफ्लेनायनि बे हावारा फिनानै दोननाय गोरबो बिखा आं थिखुं थिखुं मोनो बे आंनि जिउ सोलेरा। The voice of poetry is alive and well, and I do want to express some pain. I'm not here to make any kind of political statements. I don't belong to any political party, and I never will. But I do very sincerely believe that
The media does not now represent the voice of the people. It's being destroyed, imploded, and it's very sad because I started my career as a journalist in the Times of India many years ago. The poets, as you just heard, have the voice of the people. They have the pain of the people. And now you are hearing different, the voice of a woman who's being oppressed and she's speaking out. कि जब वो बोलती है तो बदतमीज कहलाई जाती है. You have the voice of the Mazdoor coming out from the Nepali poet. All this, and the Telugu speaker just told you about growing old. All this reflects the unspoken voice of our own people. And as long as poets write and somehow put them out, I don't know how you will do it. Some people are doing it on whatever, Facebook or whatever, I don't know. But please, I urge you to please keep writing and sharing because it's the most important thing in the world today. Thank you for coming on International Poetry Day, and thank you so much for a very, very memorable and fragrant article. Thank you, Dr. Sagarji, and all the poet participants who read out their poetry in this session. Now we will have a 10-minute tea break, and right after that we will begin our third session, which will be chaired by respected Shri Darshi. Thank you.